Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. As you know, we are discussing advanced web application development course, and this is lecture number 25. Dear student, in today's lecture, our focus will be on Ajax and jQuery, and learning objectives are: what is an Ajax, what is jQuery, how can we use jQuery Ajax methods in ASP.NET Core MVC. Dear student, this is the summary of our last lecture. The following are the online resources that I have consulted for the creation of this lecture. Ajax. Before going to discuss what is an Ajax, first of all, we should know what is JavaScript. JavaScript is a programming language that makes it possible to manipulate the content of web pages after they have been loaded. A JavaScript is used to process or manipulate contents on a page after that page have been loaded. And Ajax stands for Asynchronous JavaScript and XML. Ajax refers to a web communication approach that started to become popular in 2005 and 2006. ये Ajax एक वेब कम्युनिकेशन को रेफर कर रहा है, और ये कब शुरू हुई? 2005 एंड 2006 में जाकर पॉपुलर होना शुरू हो गई। और अब आप देखें थ्रू आउट दी वर्ल्ड सबसे ज्यादा मतलब गूगल एजेक्स एंड jQuery को यूज कर रहा है nowadays. Ajax primary purpose is to enable communication between the user's browsers and the server without having to do a full page refresh using XML HTTP request object. फंडामेंटल पर्पस क्या है कि इस तरह की कम्युनिकेशन हो सके यूजर और सर्वर में, यूजर के ब्राउजर और सर्वर में, कि जब यूजर को कुछ डेटा की जरूरत पड़े तो उसे फुल पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, वो सिर्फ वो पोर्शन सर्वर से ले जितना उसको जरूरत है और पेज पे उसी को रिफ्रेश करे. Ajax is about using ability of JavaScript to send asynchronous HTTP request and get the XML data as a response. Also in other formats. देखें XML के अलावा JSON format में भी हो सकता है. And update the part of a web page using JavaScript without reloading the entire page. This is the concept behind Ajax. Ajax is usually associated with server side application. आप देखें गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो सारी की सारी कम्युनिकेशन आपकी इंटरटेन की जा रही होती है सर्वर से. फॉर एग्जाम्पल you can use it to fetch information and display it on the page or to submit a form for processing, all without changing the full page in browser. And this is the required functionality for Ajax. Next is jQuery. Before going to discuss jQuery, you should know each browser support HTML, CSS and JavaScript differently, and most of the incompatibilities between browsers are in their document object model या DOM implementation. And what is a jQuery? jQuery and other JavaScript libraries
make it much easier to take advantage of JavaScript. कि jQuery और जितनी दूसरी भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरीज हैं वो जावास्क्रिप्ट को आसानी के साथ यूज करती हैं एंड ट्राई टू कवर इन डिफरेंसेस अमंग और incompatibilities between implementation of DOM by browsers. jQuery is a JavaScript library and it is designed to simplify HTML DOM tree traversal and manipulation. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो ट्री बनता है उसको ट्रेवर्स कैसे करना है और फिर उस ट्री में जो एलिमेंट्स या नोड्स या टैग्स होंगे उनको प्रोसेस कैसे करना है, एज वेल एज इवेंट हैंडलिंग, CSS एनिमेशन एंड एजेक्स. दिस इज द पर्पस फॉर विच jQuery library is designed. jQuery is free, open source software using the permissive MIT license. jQuery enables JavaScript programmers to code without worrying about differences among browsers without writing very much code. And the slogan is do more, write less. या write less and do more. और पर्पस क्या था कि प्रोग्रामर इस बॉदरेशन में ना रहें कि ये कोड आया इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एग्जीक्यूट होगा, ब्राउजर पे, एज ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, मोजिल्ला फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट होगा या गूगल क्रोम ने इसको यूज करना है, वो अपने उस लाइब्रेरी को यूज करके प्रोग्रामिंग करते जाएं. और jQuery में वो प्रोग्रामर्स ने अपने एक्सपीरियंस के बाद उस तरह के फंक्शन बिल्ट इन कर दिए कि वो इन डिफरेंसेस को कवर करती है और आपको एक कंड्यूसिव और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है. एजेक्स विद jQuery. अब जैसे पहले मैंने बताया डिफरेंट ब्राउजर इंप्लीमेंट द एजेक्स डिफरेंटली. दैट मीन्स if you are adopting the typical JavaScript way to implement the Ajax, you have to write different codes for different browsers to ensure that Ajax would work cross browsers on multiple browsers. jQuery simplifies the process of implementing Ajax because hand coding of Ajax sometimes becomes difficult and cumbersome for the programmer. Or jQuery makes it very simple by taking care of those browser differences so that we can write Ajax functionality with only one single line of code. That is one of the primary reasons programmers started adopting JavaScript libraries like jQuery, which is most popular. jQuery includes various simple methods to send Ajax requests that works seamlessly across browsers. These methods internally used XML HTTP request object of JavaScript, and Ajax methods are $.ajax function, load function, $.get function, $.post function, etc. These are the functions provided by Ajax, but we can use in shorthand notation by using jQuery. अब jQuery development tools क्या require करते हैं? Requires an editor to write a jQuery code and jQuery library. Editor कौन सा हो सकता है? You can use any JavaScript editor to write jQuery code including the following: Notepad, Visual Studio हम already use कर रहे हैं, Eclipse, Aptana Studio, Ultra Edit and so on. नोटपैड प्लस प्लस और भी कोई हो सकते हैं. और an editor which supports IntelliSense for JavaScript and jQuery function will increase a developer's productivity. और Visual Studio आपको most of the time provides IntelliSense. That's why productivity becomes enhanced. jQuery library कहाँ से आएगी? jQuery library is to download. You need to go to jQuery.com. आपको jQuery.com वेबसाइट को
विजिट करना होगा jQuery को यूज करने, डाउनलोड करने के लिए। यूजिंग jQuery library. अब after downloading an appropriate version of jQuery library, you can use it by taking reference of it in your web page. अब रेफरेंस कैसे लेना है? बिल्कुल वेरी सिमिलर, हम स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, उसमें सोर्स बता देंगे और फिर उस लाइब्रेरी का पाथ जो हमने डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन में रखी हुई होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर है। jQuery is regular JavaScript file that can include in your web page using the script tag as below. Similarly, जैसे आप पहले भी स्क्रिप्ट का टैग यूज करते थे, उसी के अंदर आप इस फाइल का रेफरेंस कोट कर देंगे। उसके अलावा इंक्लूड jQuery library from CDN content delivery network. You can also reference jQuery library from public content delivery networks such as Google, Microsoft, CDay, NJS, JS Deliver, etc., etc. jQuery important feature. The most important feature of jQuery are as follows. Number one is DOM selection. jQuery provides selectors to retrieve DOM elements based on different criteria like tag names, ID, CSS class name, attribute name, value, NH child in hierarchy, and etc. Similarly, after DOM selection, we can manipulate DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में के एलिमेंट्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं और उसमें यूजिंग built in jQuery function. For example, adding or removing elements, modifying HTML content, CSS class, etc. अब हम अपनी डेमोस्ट्रेशन एप्लीकेशन में भी हम चेक करेंगे कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऐड स्पेशल इफेक्ट्स। DOM elements पे you can apply specific special effects like show or hide elements. यहाँ पे हम ऐड और रिमूव कर रहे हैं। Here we are showing or hiding, fade in or fade out of visibility, sliding effect, animation. Similarly, we can process events associated with the DOM elements like click, double click, mouse enter, mouse leave, blur, key up, key down, etc. These functions automatically handle cross-browser issues without writing extra code. Again and again, the most beautiful feature of jQuery is to handle cross-browser issues without writing extra code. That's why it is going to popular day by day and used by most of the websites throughout the world. Other jQuery important function also include it provides AJAX port, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया, नेक्स्ट में भी हम देख लेंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट। और jQuery is easy to learn because it supports same JavaScript style coding. Write less, do more. This is the slogan for jQuery. Excellent API documentation. jQuery provides excellent online API documentation. Unobtrusive. jQuery is unobtrusive, which allows separation of concern by separating HTML and jQuery code. और ASP.NET MVC में भी हमारा फोकस सारा MVC का किस पे, सेपरेशन ऑफ कंसर्न पे था। सिमिलरली ऑब्ट्रूसिवनेस में भी हम क्या कर रहे हैं कि जो jQuery का कोड है उसको सेपरेट कर देते हैं किससे, HTML से, ताकि इजी टू मेंटेन हमारे एप्लीकेशन हो सके। स्टार्ट यूजिंग jQuery। अब jQuery को यूज कैसे करना है? jQuery is built around the idea of selecting objects on the page. DOM elements select करेंगे and then performing action on them. First of all, we will select any of the document object model elements like heading, like paragraph, like table data, like table row,
and so on. After selecting, then what we want to perform on that, yeah, what we want to achieve using that particular DOM element. jQuery in some ways is very similar to cascading style sheet CSS. You can use a selector to define an element or set of elements and then write some code that is applied to these elements or tags. jQuery adds a global function. अब ये देखना है jQuery क्या ऐड करते, global function. The name is jQuery after jQuery library successfully loaded. जब आपकी लाइब्रेरी आपके पेज पर आपकी ऐप में सक्सेसफुली लोड हो चुकी होगी तो एक ग्लोबल फंक्शन ऐड हो जाएगा और उसका नाम क्या होगा, jQuery. द ग्लोबल स्कोप मीन स्कोप ऑफ द विंडो, पूरे की पूरी ब्राउजर की जो विंडो है. सो द ग्लोबल jQuery फंक्शन कैन बी कॉल्ड लाइक window.jQuery और jQuery ओनली एनीवेयर in your web page. Start using jQuery. In jQuery, the dollar sign is just an alias for jQuery. Dollar sign is a short form of jQuery function, and you can write dollar function is equal to jQuery function is equal to window.dollar function is equal to window.jQuery function. These four all are equal. You can use any of them in place of each other. Dollar function or jQuery function is a selector function that selects DOM elements. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जैसे पहले भी बताया उस एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. अब वो किस तरह से करेगी, jQuery also known as dollar function takes two parameters. Number one is selector and number second is context. Selector can be CSS style selector expression for matching a set of elements in the document. For example, if you want to do something with all the div elements, अब आप अपनी उस पेज पे जितने भी div elements आपने यूज किए हैं, then use dollar function to match all the div elements as shown below. For example, selector parameter किस तरह करते हैं, jQuery और इस फंक्शन को कॉल किया और कोट्स में हम पास कर रहे हैं div और window.jQuery, फिर उसको आर्गुमेंट क्या पास कर रहे हैं, एलिमेंट क्या पास कर रहे हैं, div और डॉलर div और window.$div. कोई इनमें से you can use any of these four functions to select all the div elements. And what is context? देखिए पहले आपने देखा this is the selector element, jQuery ने इसको किया, फिर उसके बाद context आएगा. Context can be anything. It can be reference of another DOM और किसी और डॉक्यूमेंट किसी और एलिमेंट का रेफरेंस हो सकता है, और इट कैन बी अनदर jQuery सेलेक्टर, एक के बाद दूसरा सेलेक्टर एंड सो ऑन. jQuery will start searching for the elements from the element specified in the context, and jQuery selector may perform faster if you provide context parameter. Wherever required, अगर ये होगा तो आपका efficiently वो उसको परफॉर्म करेगा. And this context is optional. Either you want to use or you don't want to use. Standard jQuery syntax is a jQuery statement typically starts with the dollar sign. जैसे पहले बताया jQuery function and dollar sign both are alias and ends with a semicolon. And jQuery typically interacts with the, earlier I also told you, with the DOM elements and perform some operation on them. Therefore, we need to detect when the DOM is loaded fully so that jQuery code starts interacting with DOM without any error. You are required to wait for the full loading of the DOM without working any error. It is advisable to use jQuery after DOM is fully loaded. jQuery includes built-in function, ready function, which detects whether a particular element is ready, loaded or not. और अब हम उसको चेक करते हैं वो किस तरह से. use jQuery ready function to make sure that DOM is loaded fully.
so that we can work without any error. Window.onload and $document.ready is different. These are two functions. onload कि विंडो लोड हो तो क्या करे, डॉक्यूमेंट रेडी हो तो क्या करे, बट दीज टू आर different function. Window.onload is fired when the whole HTML document is loaded with images and other resources. अब ये कब फायर होगा, जब whole HTML document is loaded with images and other resources. And whereas jQuery ready function is fired when DOM hierarchy is loaded without other resources. कि DOM लोड हो जाए, एलिमेंट्स लोड हो जाएं विदाउट अदर रिसोर्सेज, और इधर वो क्या कह रहा है विद इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज. दिस इज द की डिफरेंस. फिर हम उसको यूज करेंगे. document.ready function does not wait for images to be loaded. It gets called as soon as DOM hierarchy is constructed fully. It's up to you. क्या आपने देखना है कि रिसोर्सेज पे आपने कोई काम करना है या विदाउट रिसोर्सेज एलिमेंट पे काम करना है. एंड रेडी डिटरमिन्स document.ready function determines when the full DOM hierarchy is loaded, whereas window.onload event is raised when the entire window is loading, not loaded, including document object model, all elements of the page, next images, CS and other required resources. The document object model loads before entire window loads. कि DOM पहले लोड होगा फिर उसके बाद एंटायर विंडो लोड होगी. और jQuery एग्जीक्यूशन स्टेप फॉलोइंग आर द स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल $document, दिस फाइंड्स ग्लोबल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. उस पेज का जो एक ऑब्जेक्ट बनता है, DOM ऑब्जेक्ट बनता है, वो उसको पहले फाइंड करेगा. आफ्टर दैट फिर रेडी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, डिटरमिन्स whether document object is ready or not. After that document.ready, then we can call any of the function, and here we can write jQuery code to interact with DOM. First of all उसने DOM ढूंढना है, फिर ready का इंतजार करेगा. अब ready होने के बाद फिर यहाँ पर इस फंक्शन में जो आपने jQuery कोड लिखा होगा, it will get executed. First thing you need to write before writing any jQuery code, you always need to check whether a document is ready or not in order to interact with DOM safely. जब तक ये ready नहीं होगी, DOM available नहीं होगा और आपका कोड आपके लिए सरप्राइज होगा. Selecting elements with jQuery. Before applying any action on the HTML element, you need to find or select the target HTML element of DOM elements. jQuery supports almost all the selectors defined in the latest CSS3 or 4 specification, as well as it has its own custom selectors. For example, jQuery select element in following ways: by selecting the elements by ID, similarly by selecting the elements by class name, by selecting elements by name, selecting elements by attribute and so on. ये आप कोई भी मेथड jQuery यूज कर सकती है आपके HTML या DOM एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए. फिर उन एलिमेंट्स पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे जो टास्क या एक्शन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं. jQuery AJAX method. Following table lists all the jQuery AJAX methods that are used to request or load external data directly into the selected HTML elements of your web page. The first function is AJAX. Next is get, post, get JSON, get script, load. And this is the description of each function. AJAX sends asynchronous HTTP request to the server using XML HTTP request object. Get sends HTTP get request to load the data from the server. हमने अपने C# सेक्शन में भी
ASP.NET कोर सेक्शन में भी हमने गेट और पोस्ट डिस्कस किया। सिमिलरली यहाँ भी हम गेट और पोस्ट को यूज करेंगे, लेकिन मेथडोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी कि उसी एक पेज पर रहते हुए। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। लोड सेंड्स HTTP request to load the HTML or text content from the server and add them to the DOM elements. अब इट्स अप टू यू। HTML एलिमेंट्स कोई पेज भी हो सकता है, कोई HTML स्निपेट आप यूज कर सकते हैं स्निपेट, या आप कोई टेक्स्ट डेटा भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं और किसमें, डॉम एलिमेंट्स में उसको ऐड कर सकते हैं। एंड दीज आर दी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय jQuery AJAX इवेंट्स। अब जैसे AJAX कॉल कंप्लीट हो, व्हाट शुड इट डू? AJAX एरर्स की सूरत में व्हाट विल इट डू? AJAX सेंड सूरत में रजिस्टर हैंडलर फंक्शन टू बी कॉल्ड बिफोर AJAX रिक्वेस्ट इज सेंट। सिमिलरली AJAX रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रही है तो क्या वो करे? AJAX स्टॉप करता है तो फिर क्या करे? AJAX सक्सेस होने की सूरत में, AJAX रिक्वेस्ट सक्सेस होने की सूरत में वो क्या परफॉर्म करे, ये हम अपने डेमोस्ट्रेशन में भी देखेंगे और नेक्स्ट भी हम इसको चेक करते हैं। तो आपको इन फंक्शंस के बारे में एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि सेंड करने से पहले क्या करना है, स्टार्ट पे क्या करना है, स्टॉप पे क्या करना है, सक्सेस पे क्या करना है। ये इवेंट्स हैं, ये अक्सर होते जा रहे होंगे और आप अपने डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म करते जा रहे होंगे। jQuery AJAX मेथड। jQuery का AJAX मेथड क्या है? इट प्रोवाइड्स कोर फंक्शनैलिटी ऑफ AJAX इन jQuery। ये AJAX मेथड के नाम से ही है। AJAX मेथड सेंड्स asynchronous HTTP request to the server and gets the data from the server. AJAX method can be used to send HTTP get, post, put, delete, etc. request. It can retrieve any type of response from the server. And syntax is very simple. $.ajax ये AJAX function and provided URL. This is the simplest syntax. And here we are also providing optional, and you can see the options are optional. Parameter description is as follows. URL is a string URL to which you want to submit or retrieve the data. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में URL के बारे में खासा देखा, तो अब हम देख लेंगे कि वो कौन सा एक्शन मेथड कंट्रोलर का हम कॉल करना चाह रहे हैं या रिक्वेस्ट उसको भेजना चाह रहे हैं। और ऑप्शंस, अब configuration option for AJAX request. An option parameter can be specified using JSON format. This parameter is optional कि आप यूज करना चाह रहे हैं नहीं। और there are lot of options और details are available on jQuery.com website. Examples of jQuery AJAX method. The load, get and post method rely on AJAX. ये मेथड किस पे रिलाई कर रहे हैं? AJAX पे रिलाई कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन AJAX ये जब भी हम लोड को कॉल करेंगे, गेट को कॉल करेंगे, पोस्ट को, ये रिलाई करते हैं किस पे? AJAX पे रिलाई कर रहे होते हैं। या हम डायरेक्ट AJAX को यूज कर लें विदाउट मेंशनिंग लोड गेट पोस्ट, फिर हम ऑप्शन में सेट कर देंगे, या हम डायरेक्ट लोड गेट पोस्ट को यूज करें और AJAX रिक्वेस्ट हम क्रिएट कर लें। AJAX हैज लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने बताया, आप jQuery.com विजिट कर सकते हैं और वहां से उन प्रॉपर्टीज को केयरफुली चेक कर सकते हैं विच आर नीडेड यूजफुल फॉर योर AJAX रिक्वेस्ट। अब सेंड कैसे करनी है रिक्वेस्ट? सिंपल, $.ajax पैरेंथेसिस, उसमें ये URL, जैसे हमने यहाँ पे jQuery, दिस कुड बी नेम ऑफ योर कंट्रोलर एंड गेट डाटा, दिस इज एक्शन मेथड। ये कमेंट्स आ गए हमने। फिर उसके बाद कि अगर ये फंक्शन, ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें और क्या करें? ये देखिए, ये कमेंट पार्ट है कि डॉलर, और फिर उस पे जो आपका इस वक्त पेज है, डॉक्यूमेंट है, उस पे P एलिमेंट को फाइंड करे, सिलेक्टर यूज कर लेगा P एलिमेंट, उस पे अपेंड कर दे डाटा। जो डाटा सक्सेस की सूरत में इस URL से
रिटर्न हुआ वो आ जाएगा और इस p एलिमेंट को वो पॉपुलेट कर देगा। jQuery load method is simple but powerful AJAX method. Load method is used to load any static or dynamic data, HTML or text content from a server and puts the return data into the selected DOM elements. Syntax is very simple. डॉलर सेलेक्टर को एज हम पैरामीटर पास करेंगे, डॉट लोड कि कौन सा डॉम एलिमेंट होगा और फिर हमने लोड करना है। लोड के बाद यूआरएल के ये लोड रिक्वेस्ट किस यूआरएल पे जाए, वहां से हमें कौन सा डाटा लाना है, ले जाना है और फिर उसके रिजल्ट में किस फंक्शन को हम कॉल बैक करें। URL of the server side resource to which the request is sent. It could be a CGI, ASP, JSP or PHP script which generate data dynamically or out of a database. Data optional parameter है, represent an object whose properties are serialized into properly encoded parameter to be passed to the request। कि हम उसको JSON फॉर्मेट में या जो भी हमारा वहाँ रिक्वायर्ड है उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इट स्पेसिफाइड द रिक्वेस्ट इज मेड यूजिंग द पोस्ट। अगर लोड में हम स्पेसिफाई कर दें पोस्ट मेथड, अगर हम ओमिट कर दें तो ये गेट मेथड होगा बाय डिफॉल्ट लोड। और कॉल बैक फंक्शन इन्वोक्ड आफ्टर द रिस्पॉन्स डाटा हैज बीन लोडेड। ये डाटा लोड हुआ, उसके बाद हमने क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन इनटू द एलिमेंट्स ऑफ मैच सेट। The first parameter passed to this function is the response text received from the server and second parameter is the status code। पहले में जो डेटा हमने रिसीव किया वो होगा और दूसरे में स्टेटस कोड होगा कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटस कोड वी विल डिसाइड फर्दर। लोड मेथड एग्जांपल डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और उसके बाद अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा, डॉलर ये सिलेक्टर माई बटन डॉट क्लिक फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हो जाए और जब ये बटन क्लिक हो तो ये लोड डॉलर हैश माई डिव डॉट लोड के इस सैंपल HTML को लोड करे और किस में करे, माई डिव में, जिसका आईडी माई डिव है उसमें ये लोड कर ले। लोड फंक्शन को हम यहाँ कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये रेडी फंक्शन को हमने यहाँ इनक्लोज कर दिया। jQuery get method sends a synchronous HTTP get request to the server and retrieves the data. Syntax is very similar to load or AJAX. $.get, or we are passing two parameters. Number one is URL, number second is callback. URL is required parameter और यही स्पेसिफाई कर रहा है यू विश टू रिक्वेस्ट, कि कौन सा URL है जिसको आप रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं। कॉल बैक इज ऑप्शनल पैरामीटर, इज द नेम ऑफ द फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द रिक्वेस्ट सक्सीड होती है तो क्या करें, फेलियर की सूरत में फिर क्या करें। नेक्स्ट इज and last jQuery method is jQuery post method. Post method sends asynchronous HTTP post request, similarly HTTP get request की तरह ये भेजेगा to the server to submit the data to server and get the response. Syntax is again similar to get AJAX method, $.post और हम पैरामीटर पास करें URL, data and callback. Description of URL, required URL parameter specifies the URL you wish to request, same, and data is optional parameter specifies some data to send along with the request जिसने जाकर सर्वर पे प्रोसेस होना है और किसी वेब रिसोर्स को फिर उसने क्रिएट करना है या आपको रिटर्न करेगा। कॉल बैक इज ऑप्शनल parameter and it's the name of the function to be executed if the request succeed. Dear student, in today's lecture we try to cover in simply AJAX, what is jQuery and what are jQuery AJAX method.
and in our next demonstration application we will check and apply these methods to our demo application, and we will further clear our concepts. Dear student, you are also required to perform these functions as your own, and feel free to ask any question. Thank you and Allah Hafiz.